नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। बहुत डल मार्केट है। निफ्टी आप देखें करीब 32 अंक नीचे, निफ्टी आई थी बिल्कुल फ्लैट, बैंक निफ्टी मात्र 41 अंकों पर। मैं इंडस्ट्री से बातचीत करूंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कार्यक्रम की शुरुआत में विषय को बदल रहा हूं मैं आज। एग्जैक्टली हमारे साथ इस वक्त टाटा स्टील के नंबर्स जो आप सुबह देख रहे थे, जो कि एक सरप्राइज पैकेज था पूरी स्ट्रीट के लिए, उससे बातचीत करेंगे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में। देर में हम निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आएंगे और स्टॉक फ्यूचर्स पे आएंगे। आपने नंबर्स देखा, इस बार के लिए अगर आप देखें करीब करीब कंपनी को 96,600 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले करीब 2500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। खासकर जो इनका यूरोपियन बिजनेस है वहां पे काफी डेंट पड़ा है। नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टाटा स्टील के एमडी सीईओ श्री टीवी नरेंद्रन मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आई थिंक इन नंबर्स को बाजार समझने की चेष्टा कर रहा है। करीब करीब सर 2500 करोड़ रुपए का लॉस इस क्वार्टर में, इसके पीछे कारण क्या है एग्जैक्टली? और स्पेशली आई मीन यूके ऑपरेशंस, उनसे काफी डेंट पड़ा है। एग्जैक्टली इस 2500 करोड़ की जो लॉस थी उसके कारण क्या रहे इस बार? दो चीज है जो which had a big impact on last year's quarterly performance. One is the operational issue, which is more to do with the European performance. क्योंकि आप देखिए तो last quarter the realizations in Europe dropped by about 160 pounds per ton. So that was a significant drop in realization. Cost का भी हम लोग का we had a cost drop in input cost because the coal prices dropped by about $90 per ton. Iron ore dropped by about $20 a ton. पर हम लोग का जो stocks था, we had stocks which were produced in the previous quarter at a very high price. We had to take an NRV loss on that. So that had an impact, and hence the overall cost has increased by about 31 pounds per ton for the quarter. So operationally, you saw Europe going into a negative EBITDA territory for the first time in a long time, right? That is one thing. But the bigger reason of this 2,500 odd crore loss is that we have to de-risk the pension funds in UK. You know, we have a very big pension fund in UK, which we have de-risked over the years. A lot of that is getting transferred to the insurance companies. And when you do that, there is a deferred tax credit which is there. हम लोग का deferred tax credit है. So that gets adjusted. So it's a non-cash loss. It's an adjustment for the deferred tax credit that we've had in our books. And that's why the almost 2,000 crore is because of that. So that's why the numbers are worse than people expected, because this deferred tax credit is a one-off. There is some more left to be done next year. जब हम लोग का ये जो pension fund का जो issue है, once we finally sort it out, there will be some more of these adjustments to be made. But this is largely to de-risk the business. ओके, मतलब आपने अगर आप देखें दो मोटे तौर पे कारण बताया इसके यहाँ पर, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करूँ नरेंद्र सर, कि वहाँ स्थिति क्या है, रियलाइजेशंस कितने डिप हुए, और क्या वर्स्ट हमने इस क्वार्टर में देख लिया है कि अभी थोड़ा सा अगर आप देखें ये डिजिट्स, ये नंबर्स जो हैं वो थोड़े से और वीक हो सकते हैं, स्पेशली फॉर यूरोपियन ऑपरेशंस? No, things will improve. We won't be totally out of the woods yet, but things will improve this quarter. क्योंकि if आप देखिए तो यूरोप में both gas prices and energy prices have started coming down because the winter was not as bad as they feared, and Europe has enough gas stock. So I think that was the build up to the winter. पर अभी हम देख रहे तो दोनों energy prices and gas prices have come down, which is positive for us. Secondly, the steel prices have started going up in Europe. Largely driven by international में जो हो रहा है, because with the opening up of China, steel prices globally have gone up by $100. तो यूरोप में भी हम लोग देख रहे हैं कि almost 50-60 euros का सुधार हुआ है spot prices में. पर on the other side, we have these long-term contracts. उसका renegotiation हुआ है ये साल में. Those are obviously at a lower price than last year's long-term contracts because they were negotiated in January of last year. So we have a plus and a minus. Overall, I expect the performance in Europe to be better this quarter than last quarter, but we will not be fully out of the woods yet. ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेकिन अब अगर आप, मैं भारतीय कारोबार की बात करूँ, इंडियन बिजनेस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका एबिटा पर टन में एक सुधार देखा गया है। मोर और लेस अगर आप देखें, आपको जो लोअर कोकिंग कोल कंजम्पशन कॉस्ट है उसका काफ़ी एडवांटेज मिला। इंडियन ऑपरेशंस आगे जाके आप कैसे देख रहे हैं, और यहाँ पे स्थिति क्या है, विजिबिलिटी क्या कहती है? So I think India business, आप देखिए तो quarter on quarter there is continuous improvement, and that will continue because one is the costs have come down because the July, August, September quarter was the worst quarter in terms of input cost. Coking coal, which we bought in the first quarter, came into our cost in the second quarter. तो आप देखिए तो last quarter में हम लोग almost $80 reduction in coking coal cost आया है.
ये quarter maybe about $10 reduction in coking coal cost will be there. But more importantly, steel prices in the domestic markets have started going up since December. Steel prices in the international market has also started going up since December, and the export duty which was there was removed in November. So, and finally, the demand in India continues to grow, and with the budget focus on infrastructure, we expect it to be very strong. And last quarter, May we also had this issue of Nilachal, जो हम लोग acquire किया है. We have started the production, but most of the sales will start happening from this quarter. So we'll get the benefit of sales out of Nilachal this quarter. We didn't get that much of a benefit in the last quarter. So in many ways, the India business will continue to improve. ओके बट सर मेरा आखिरी प्रश्न यही होगा कि मतलब अगर मैं एक ब्लेंडेड व्यू लूँ, मतलब ओवरसीज ऑपरेशन, यूरोपियन ऑपरेशन, इंडियन बिजनेस, दोनों को लेकर आगे की अगले 2 क्वार्टर्स की स्थिति आपको कैसी नजर आती है? तो आप ग्लोबल डिमांड देखिए तो द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन हैज फोरकास्टेड दैट शायद 1-2% का ग्रोथ होगा ग्लोबली, but they assumes that China will have 0% growth in steel consumption. अगर चाइना में थोड़ा ज्यादा सुधार हुआ तो that will change. So hence the overall world consumption growth is more dependent on what happens in China. दूसरा बात यह है कि इंडिया में the steel consumption is expected to grow at least 6-7%, which is the rate at which the GDP is expected to grow. पर आप देखिए तो Tata Steel's growth in India has been higher than the consumption growth in India, and that is because we have a very strong franchise, very strong relationships in the market. So our volumes in India will grow based on our production, and globally, if you look at it, the demand is expected to come back this year, simply because there's a little bit more recalibration to the new reality in Europe. आप US में देखिए तो because of the Inflation Reduction Act, a lot of investments are expected to come into the US. China, I think, will recover better than most people think. And some of the other markets like Southeast Asia, Middle East, Africa, etc., continue to be quite strong. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन क्वार्टरली नंबर्स पर आई थिंक स्ट्रीट समझना चाहती थी और सुनना चाहती थी आपको और आपके आगे की क्वार्टर्स के आउटलुक को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी अगर आप देखें प्रश्नों पर बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ टाटा स्टील के MD and CEO मिस्टर